हर मूवी में एक हीरो और एक विलन होता है, तो किसी को तो आपको विलन बनाना ही है, तो व्हाई नॉट बी? बिकॉज द रियलिटी इज कि आपने विलन इसलिए बनाया क्योंकि जो इंसान सिर्फ टीम स्पोर्ट की बात करता है, टीम की बात करता है, और जो सिर्फ ये कहता है कि टीम इज बिगर देन एन इंडिविजुअल, अगर आप उसको विलन बनाना चाहते हो, सो बी इट. बट द थिंग इज, आई एम नॉट गोना गो आउट देयर एंड एवर डिफेंड माई सेल्फ, बिकॉज माई ऑनेस्टी विल वन डे डिफेंड मी. But I'm not going to go and say कि मैंने ये ठीक किया, मैंने वो गलत किया. That is not me. I think I'm not going to sit here and say that okay, selectors have more power or the coach has more power. I think we all are in it together. That is something that is very, very important. Ultimately, whether it's the chairman selector, whether it's the selector, whether it's the head coach, the point is that Indian cricket needs to do well. And it is sometimes always good to have difference of opinion. But when you finish that difference of opinion, when you come on the same page, that things should be only in the best interest of cricket. And I'm very fortunate that we had someone like Ajit Agarkar, who's worked so honestly since he's there as a chairman selector. And most importantly, I think BCCI has given the selectors and the head coach the complete freedom to call the shots and take the right decisions, which is in right interest for Indian cricket. Cricket in India is a religion, and people expect so much out of the players. That's why I say that players should be allowed to fail. Players should be allowed to make bad decisions. But again, I think that is the expectations which people have from the Indian team, and which again is a good thing, because you only expect from people who can deliver. And how well these guys have delivered, whether it was Champions Trophy, whether it is now the T20 World Cup, आप उन लोगों से expect नहीं करते जिनको आपको पता है कि they will not be able to deliver. And when the expectation is there, which again is great thing for Indian cricket, and I think that expectations stay, but that criticism should come down a little bit. Tell me one human being in this world who has not made mistakes. I don't need to cover up. Why should I cover up? Because ultimately, as I said, that I am not accountable to what people say on social media. I am accountable to my players. I am accountable to a common normal fan जो ना views, ना TRPs, ना जिसके vested interest है Indian cricket के साथ. I am only accountable to them. And if I'm accountable to them, I'll be the first one to put my hand up and say that yes, I have made a mistake. And everyone should be allowed to make mistakes. I have made mistakes. I might make mistakes in future as well. I'm not going to say that I will not make mistakes. Yeah, I will make mistakes. Bad decision with right intention is acceptable. Wrong decision with wrong intention is not acceptable. I will make wrong decisions. I will make right decisions. It's a sport. कि ऐसा नहीं है कि आप मुझे एक आदमी बताओ जिसने स्पोर्ट में सारे डिसीजंस ठीक लिए होंगे. And in future also I will. There are certain decisions which will go the other way, but the intention will never be compromised. I think my instinct is what I trust the most. I don't look at data. I don't look at any other thing. If my instinct says, and if I see myself and say that yes, this is the right call for the team, and I will back it to the hill. If it doesn't work, I'll be the first one to put my hand up and say yes, it didn't work. हर मूवी में एक हीरो और एक विलन होता है, तो किसी को तो आपको विलन बनाना ही है, तो why not be? Because the reality is कि आपने विलन इसलिए बनाया क्योंकि जो इंसान सिर्फ टीम स्पोर्ट की बात करता है, टीम की बात करता है, और जो सिर्फ ये कहता है कि टीम इज़ बिगर देन एन इंडिविजुअल, अगर आप उसको विलन बनाना चाहते हो, सो बी इट. बट द थिंग इज, आई एम नॉट गोना गो आउट देयर एंड एवर डिफेंड माई सेल्फ, बिकॉज माई ऑनेस्टी विल वन डे डिफेंड मी. बट आई एम नॉट गोना गो एंड से कि मैंने ये ठीक किया, मैंने वो गलत किया. दैट इज़ नॉट मी. द फैक्ट इज़ दैट, और ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी, जो मेरे को जानते भी नहीं, और कई बार ये वो लोग भी बोलते हैं जो मेरे को जानते हैं. तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट राइट. जो लोग मुझे जानते हैं वो ख़राब है कि आप मुझे जानते हो, आप मुझसे मिले हो, आपको पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, सिर्फ क्योंकि आपको अपने व्यूज़ चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपको क्लिक्स चाहिए, वट एवर, तो यू वॉन्ट टू टॉक नेगेटिव. दैट एंड अब मिसअंडरस्टूड हूँ नहीं मिसअंडरस्टूड, उसमें आई कांट टॉक अबाउट इट. हाँ, एक चीज़ बोल सकता हूँ कि हाँ, एक्सट्रीमली ऑनेस्ट हूँ, एंड आई लिव माई लाइफ अ लॉट इन ब्लैक एंड वाइट, एंड आई डोंट थिंक सो कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रे एरियाज इन माई लाइफ. आई डोंट रन दैट वे.